Hello students, once again welcome to this video lecture, and now I am continuing the lecture which we are discussing in the last lecture. That is, we are evaluate such type of integral in which integrand contains rational expressions, rational functions, and we are evaluating these integrals using partial fractions. And hello students, in the last lecture you have seen that we are discussing about the integration of rational functions in which the factor of denominator are linear and non-repeated. And here is another example. You can see here, this is the also types which are whose factors of denominator are linear and non-repeated. So we are going to start to evaluate this integral. So look at here. You can see this is the rational expression. So we have to, first of all, we have to resolve into, this rational function into partial fraction. So take it. So here we write resolution. 2x minus 3 upon x minus 1 into x minus 2. Here we can write a upon x minus 1, b upon x minus 2. Hello students, now we evaluate, we find out the value of, we are going to find out the value of a and b using comparison method. Here we use comparison method. First of all, we have to write where a and b are unknown parameter. Clear? Now, taking LCM, we will get x minus 1 into x minus 2. Here a into x minus 2. Here b into x minus 2. Clear? Taking the like term in one place means you have to write x and the constant term. So here we can write a plus b into x. This is the term involving x, and here we have to write constant terms. So constant term is minus 2b minus 2a minus b. So here minus 2a minus b, and the denominator is x minus 1 x minus 2. Okay. Now we have to use comparison method to find out the value of a and b. So we here we write, here we use comparison method. How do we compare? We already know that we compare the same term which looks like same. You can compare the term x on both of the side, and you can compare the term constant term on both of the side, because the denominator of both the rational functions are same. So here we can compare the coefficient of x is a plus b. And here on the left side you can see the coefficient of x is 2. So we can write a plus b is equal to 2. Here the constant term is minus 2a plus b. Sorry, minus 2a minus b. And here the constant term is minus 3. So you can write minus 3. And look at this. This is what? This is the system of linear equation. You can see here. This is the system of linear equation in terms of a and b. And under 10th or 9th classes, you have already read and you have already known about that. How can we
find the value of A and B. So you have three methods. You have three methods. You already heard about it. These are elimination method, substitution method, and cross multiplication method. The cross multiplication method, further in 11th or 12th standard, especially called Cramer's rule. You can already know what is the Cramer's rule. So there is no mandatory that what methods you are using to evaluate the value of A and B, you are using to find out the value of A and B. Whatever be the methods, we have also find the value of A and B. So here we use simply elimination method. Okay. Now you can see here B is positive, here B is negative. We simply add these two equations. After that, we will get the B and minus B cancel out. So here we can get minus A minus 2A minus 2A. Here we can get minus 1. So therefore A is equal to 1. If A is equal to 1, then what about B? The B is equal to also 1. Therefore B is equal to 1. Clear? Now you can see here. Now we can write this is equal to. Now we can write 2x minus 3 upon x minus 1 into x minus 2 is equal to 1 upon x minus 1 और कितना है यहाँ पे 1 upon x minus 1. Clear? Can you see there? Okay, we write here in place of 2x minus 3 upon x minus 1 into x minus 2 we can write लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं a की जगह पे कितना है 1 तो 1 upon x minus 1 प्लस b की जगह पे कितना आया b भी 1 आया तो 1 upon x. अब हमको इसका इंटीग्रेट करना है ठीक है तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 3 x minus 1 into x minus 2 with respect to x. इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 with respect to x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 2 with respect to x. क्या लिख सकते हैं कि नहीं हम? अब इन दोनों का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ln mod x minus 1 प्लस ln mod x minus 2 प्लस कांस्टेंट टर्म से. अब चाहो तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लिख सकते हैं ln mod x minus 1 into x minus 2 plus constant term c, and here is the final answer. So you can see here to find out the value of A and B we use comparison methods. Okay, we have three methods to find out the unknown parameter. We have already discussed in the last lecture and I told you that there are three methods to find the unknown parameter when we resolve factorized. There are three methods. These are, I recall you, these are first comparison method, second limiting method, and third is what? Third is value putting method. We have already known about the comparison method and here we can also use the comparison method. So comparison method is so easy and I have told you in the last class that when the number of unknown parameters are more than 3 means if the number of unknown parameters are 4, 5, 6 but in that case we do not use the comparison method because in this case when we use the comparison method it becomes so complicated. So the calculation becomes complicated and it will be a chance to get a wrong answer. Clear? So in that situations we use limiting method. Actually we have always tried to find out, we have always tried to use limiting method whenever it is applicable. And in the last class
we have already told you that when we deal with this type of expression, means linear and non-repeated, you can freely use what? You can freely use limiting method, because it is so simple and there is no chance to occur error in that calculation. Clear? So comparison method is also a method, so here we use this. This is the purpose to find out A and B using comparison method, because I showed you how can we use the comparison method to find out the unknown parameters A and B. So what will be the method you can use? You can use, but care about that there will be no mistakes in the calculations and the actual data are coming. Therefore, you can get the final and accurate answer. Clear? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग टाइप बी की तरफ चलेंगे. पहला टाइप क्या हुआ था? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड. अब जो मेरा टाइप होगा वो लीनियर एंड रिपीटेशन वाला केस होगा, जो कि मैं इसके बाद देखूंगा. ठीक है? Hello students, now we are going to the next sections in the topic which we are currently discussing. The topic is the integration of rational expression using partial fraction, and we have already told you that the partial fraction is divided into 4 parts, which is based on the nature of fraction of the denominator. Here you can see that we have taken an example. This is the integration of the rational expressions x plus 5 upon x minus 2 ka whole square. You can see here, and this is the type of linear and non-repeated. Sorry, this is the type of linear and repeated, because we have already dealt the type linear and repeated, non-repeated. Here is the type of linear and repetitions. You can see here. Here the denominator is x minus 2 ka whole square. Actually you can see that the denominator is x minus 2. You can write x minus 2 into x minus 2. Means the linear expressions written in 2 times. Okay? That's why it becomes repetition. It becomes repeated 2 times. So these problems belongs to this type, which is called linear and repeated. And here we can see that, first of all, here we can see that how to resolve these rational functions into partial fraction. Because we have already told you that in this type of equations, 90% works belongs to resolutions of the partial fractions. Only 10% work are considered as integrations. So we have to resolve these linear expressions, these rational functions as a partial fraction. So देख सकते हैं resolution. ठीक है? क्या किया मैंने? x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. सबसे पहले जो भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन उसको लिख लो आप, और आपको पता है दिस इज लीनियर, इसलिए इसके ऊपर में इससे कम डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल लिखना है. तो लीनियर से कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो यहां हम लोग को एक कांस्टेंट लिखना है. लिख लिया, अननोन कांस्टेंट लिख लिया प्लस. लेकिन रिपीटेशन वाले केस में अगर आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो एक टर्म और लिखना पड़ेगा, और वो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर. और आपको लग रहा है कि इसको जब ब्रेक करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और रूल है कि क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर लिखना चाहिए, बट यहाँ नहीं है. यहाँ क्या बात है कि यहाँ आपका लीनियर ही है, बट ये रिपीटेशन का केस है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक ट्रीट नहीं करेंगे, इसको लीनियर ही मानेंगे. और लीनियर मानते हुए ऊपर में एक कांस्टेंट टर्म है.
क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका एक रैशनल एक्सप्रेशन है जो किस कैटेगरी में आया? लीनियर एंड रिपीटेड के केस में आया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से इसका रिजोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है x-2 को लिख दिए, उसके ऊपर में कांस्टेंट है और जितना पावर रहेगा उतना पावर तक आपको जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू द पावर which is situated here. If मान लो सपोज दैट कि अगर यहाँ x-2 का होल क्यूब रहता तो इसका मतलब क्या करते हैं आप? एक स्टेप और जाते। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे रहता है x-2 का होल क्यूब, तो एक स्टेप आपको और लिखना रहता और वो होता था c/x-2 का होल क्यूब। क्लियर? तो this is the rule, this is the method to write resolutions of this type of rational functions. But this is only 2 is present here, so we need not to write this term. We have to write only this plus this. Clear? Here you can see here a and b are two unknown parameters. Clear? A and b are two parameters. Now we have to evaluate the value. Now we have to find out the value of a. I have already told you that जब भी आपको लिमिटिंग मेथड का यूज करना है, अगर आपको लग रहा है कि लिमिटिंग मेथड लग रहा है तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि लिमिटिंग मेथड जो होता है बहुत सिंपल होता है और आपको इजीली कैलकुलेशन करेगा और एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ भी हम लोग जो है लिमिटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बताए थे कि लिमिटिंग मेथड के साथ एक मेथड और आता है जिसका नाम था वैल्यू पुटिंग मेथड। और वैल्यू पुटिंग मेथड जो है वो सपोर्टिंग मेथड है, वो हेल्पर है, वो आपका हेल्प करता है। और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जब भी आप लिमिटिंग मेथड यूज करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि लिमिटिंग मेथड से आपका सारा अननोन पैरामीटर जो है वो उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। कभी कभी कुछ अननोन पैरामीटर्स रह भी जाते हैं, तो वैसे सिचुएशंस में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। और वो समय आ गया जब हमको वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज यहाँ करना है, क्योंकि लीनियर एंड नॉन रिपीटेशन के केस में जितने सारे भी अननोन पैरामीटर थे सब तो आपका लिमिटिंग मेथड से निकल गए, वहां आपको वैल्यू पुटिंग मेथड की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ आपको वैल्यू पुटिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी और वो यहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ हम लोग ए और बी में से जो हायर पावर वाला होगा, हायर पावर कौन है? बी। तो बी को हम लोग लिमिटिंग मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ लिखेंगे यूज लिमिटिंग मेथड to find only b। सिर्फ हम लोग b को लिमिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लिमिटिंग मेथड? तो यहाँ लेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है? हियर यू कैन राइट x + 5, यू कैन राइट x-2 का होल स्क्वायर, हियर यू कैन राइट x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर हो गया a x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया x-2 और यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये हो जाएगा b x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ आप लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। इसी की वजह से 0/0 आ रहा था, कैंसिल आउट हो गया। इसी की वजह से 0/0 आ रहा था, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जो है एक टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हो जहाँ x है वहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ हो जाएगा b। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या मिला? b = 7 मिल गया। क्लियर? अब जब b का वैल्यू 7 मिल गया तो हम b का वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं। तो therefore अब मेरे पास कितना है? अब मेरे पास आया x + 5 x-2 का होल स्क्वायर = a x-2 प्लस b की जगह में कितना रख सकते हैं? 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ने क्या किया कि दो अननोन पैरामीटर में से एक अननोन पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यूजिंग लिमिटिंग मेथड। क्लियर? अब क्या करेंगे कि बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग वैल्यू पुटिंग मेथड। आपको सवाल ये है कि सर वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या करते हैं? तो वैल्यू पुटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, नाम से ही स्पष्ट है, वैल्यू पुट करना है, मतलब x की जगह में कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड करना है। और आपको बता दें ये जो आप देख रहे हो
ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एक नंबर, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि x की जगह में अगर यहाँ कुछ भी रखोगे तो इसका वैल्यू अगर मान लो कि अल्फा आ गया, वही चीज अगर x की जगह में यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू भी अल्फा ही हो जाएगा। मतलब इफ वी पुट सेम थिंग्स, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन either side of that equations, you will get the same value on both sides. If you will get alpha on right hand side, then we will also get alpha on the left hand side. So this is called identity. So this is an identity. To find out the value of a, we have to put a value of x in left and right expressions in place of x. But there is a precautions. There is something, some precautions here. We can't put in place of x the roots of the denominator. You can see here the roots of the denominator is 2, so we can't put x is equal to 2 here. अगर हम x बराबर 2 डालते हैं तो क्या होता है? अगर आप x बराबर 2 डालते हैं तो आप देख सकते हो कि a अपॉन 2 माइनस 2 जीरो, और a कोई कांस्टेंट है उसके नीचे जीरो हो गया। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि किसी अननोन टर्म के नीचे में डिनोमिनेटर, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो उसके नीचे में अगर जीरो हो जाए तो समथिंग बाय जीरो जो है वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो जब फिर अनडिफाइंड वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर a का वैल्यू निकलेगा कहाँ से? नहीं निकलेगा। तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि x का वैल्यू हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? डिनोमिनेटर के रूट्स को छोड़कर हम चाहे जो भी पुट करें a का वैल्यू आपका निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो a का वैल्यू कुछ और आएगा, और x का वैल्यू 5 रखेंगे तो a का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। आप कुछ भी रखिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x की जगह में 10 रखो, 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, 0 रखो, बट 2 मत रखो, तो आपका a का वैल्यू हर केस में सेम ही होगा, बिकॉज दिस इज ऑफ आइडेंटिटी। ऐसा इसलिए होता है कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि x की जगह पे कुछ भी रखिएगा तो a का जो वैल्यू आना है वो हर बार सेम ही है। ऐसा नहीं है होगा कि किसी बंदे का कुछ और आ गया, किसी बंदे का कुछ और। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो सबसे आसान होता है, क्यों? हम जीरो सबसे बेटर। तो यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पुट x बराबर 0 इन a, नंबर 1। एक नंबर पे जीरो रख देते हैं, जैसे ही जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/4। यहाँ जैसे ही जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a/-2। और जैसे ही जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? +7/4। क्लियर? चलिए यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, ये हो जाएगा -a/2 की जगह में +a/2 हो गया, और उधर जो 7/4 है -5/4 है। ठीक, तो a/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4, कहने का मतलब 1/2। तो देयरफॉर जो a आ गया वो हो गया आपका। क्लियर? हेंस जो आपका कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया तो आपका कितना हो गया? x - 5 x + 5 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। इन प्लेस ऑफ a you can write 1, you can write 1 upon x - 2, प्लस इन प्लेस ऑफ b you can write 7, तो 7/x - 2 का होल स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? Hello students, you can see here we have already find the value of a and b, so we have to substitute the value of a and b in place of a and b. So you can see here we write hence x plus 5 upon x minus 2 का whole square is equal to, in place of a we can write 1, so we have we write here 1 upon x minus 2 plus b, in place of b the value of b is 7, so we can write 7 upon x minus 2 का whole square. This is complete partial fraction. ठीक है? The major work of these problems has done. Now we are going to the remaining part. Actually the question is we have to integrate this integral with respect to x.
So you can see here the value of this in place of this you can write this and this. फैक्टराइजेशन क्यों मतलब सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन क्यों किया जाता है? इंटीग्रेशन बनाने के लिए। तो इसलिए देखिए दो पार्ट में टूट गया और इंटीग्रेशन दोनों में लगा दिया। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है ln mod समथिंग होगा, तो ln mod x हो गया। अब यहाँ पे क्या किए, माइनस से नहीं है, माइनस तो था नहीं, यहाँ प्लस था ना, तो ये माइनस साइन मैनेज करने के लिए यहाँ पे अंदर में मैंने माइनस रख दिया इंटीग्रेशन के भीतर, और अपॉन हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप एक फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय x। सो हियर वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय समथिंग 1 बाय x माइनस 2 अब प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये तो फार्मूला। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग but the main portion of this type of problems is resolution into partial fractions. Now we can see another example. Hello students, we can see another examples in the next lecture. So thank you for watching this video. I hope that this video will be fruitful for you, and thank you so much.